So we was discussing about the dispensing pharmacy, and we have seen these topics. We have seen these points from dispensing pharmacy. So we have seen the part. We have seen the we have seen the parts of prescription. After that, we have seen the your incompatibilities. After that, we have seen the incompatibilities. After that, we have seen the posology. After that, I have also explained you few terms in the Latin. So Latin terms which are used in the dispensing pharmacy. Then again, we were started with the these dosage forms. So we have discussed about the these few dosage forms. We have seen sprays and ear drops. After that, we have also seen these. Okay, we have also seen sprays and ear drops. So last slide is this. So we'll start from this slide. So what do you mean by aerosol as a dosage form? Aerosol is nothing but the kind of dosage form, or you can say spray. So in this medicament, along with the mixture of medicament, along with the solution solvents and propellants, which are packed under the pressure in a pressurized container. So they are the pressurized specialized container having mixture of drug and propellants. There might be either two-phase system or three-phase system. We are going to see in the details about the aerosol in the industrial pharmacy. And then what do you mean by implants? So implants are nothing but the small tablets. Implants are nothing but the small tablets, particularly steroidal drugs. So what is expected? They should act for longer period. So that's why delayed. Well, you want a delayed action. You want a sustained action, right, for a month. That's why implants. So they are the small tablet which are sterile tablets. They are meant for placing, and they are placed under the skin by making a small incision or by making a small operation. So you have to prepare that implant that will release the drug slowly over a period of weeks or over a period of month. So they are there is a small operation. Okay, there is a incision to the skin, and below that skin the tablet is placed, known as an implant. Then what do you mean by gargles? Gargles, these are the aqueous solution containing mostly antiseptic drug or antibiotic or anesthetic drug. Okay, तो gargles में mostly ये drug होता है, antiseptic, antibiotic or anesthetic. Now they are the aqueous solution. They are used for the treatment of infection, particularly infection of your throat, larynx, pharynx or nasopharynx, nasopharyngeal infection. Gargles. Now what you have to do? You have to take a gargle solution in a warm water and you have to gargle in the mouth. आपको कुल्ला करना है उसे, है ना, मुंह में आप जो मुंह में सपोज वो कुल्ला करते हो ना वाटर से, या फिर गुलने करना. So they are the thing with the gargle. They are mostly used for the throat infections and ओके nasopharyngeal infection, pharyngeal infection. अगर आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आपकी मम्मी क्या बोलती है कि एक पानी ले ले, गर्म कर ले, उसमें नमक डाल और उस पर कुल्ला कर ले. So they are nothing but the gargles. They are meant for gargling in the mouth and must be diluted before use. Now next one is nothing but the liniment. Liniment are nothing but the viscous medicated local preparation. They are applied externally by rubbing action. So we have seen the lotions. Lotions are also preparation which are applied externally, but lotions they are not applied by rubbing. Okay? है ना, ऐसा मतलब होता है ना, रबिंग एक्शन मतलब क्या है, जोर से उसको मसाज करके लगाना है. रबिंग एक्शन मतलब यू हैव टू अप्लाई विद द फोर्स एंड मसाज, है ना. सो दैट इज लिमिट. सो लिमिट, they are viscous medicated preparations locally acting. They are applied on a skin by rubbing action. Particularly, they will have these liniments. They will have a drug which is known as a counter irritant. Counter irritant. So they will have counter irritant type of drug or analgesic drugs. So that's why liniment. Then we have seen mouthwash. So mouthwash means drug containing again antiseptic drug to promote the oral hygiene. That is to reduce the oral infection, plague, gingivitis, dental caries also, and stomatitis. Also,
Mouthwash is also used for the cosmetic purpose. For example, if anybody's mouth is smelling very bad, so mouthwash is prescribed. That is for cosmetic purpose. They are also used for externally and their label should have indication for external use only. जो भी लेबल होगा माउथ वॉश का उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि इट इज externally use only for external use only. Now what is meant by throat paints? Throat paints. So they are the highly viscous gelatin containing preparation, or they are highly viscous. Sorry, they are highly viscous glycerin containing preparations, and they will leave a thin film over the affected ear. They are also applied for throat. Okay, they are also applied in the throat. They will leave a thin film over the affected area. Now they are made with the volatile solvent. इसमें volatile solvent के इसमें प्रिपेयर करते हैं और जब भी आप उसको अप्लाई करते हो so वहाँ से volatile substance evaporate होते हैं and they will leave a thin film. So again they are also used in the throat infections, throat pains, throat infection. They are mostly used in the throat infection and coughing. Okay, they are having soothing action. Now next is elixir. इसके ऊपर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है elixirs. So they are nothing but the liquid dosage form which are sweetened and flavored. Sweet हो गए, flavoring agent उसमें होगा, sweetening agent होगा. They are the sweetened flavored hydroalcoholic preparation containing a potent drug. हाइड्रोअल्कोलिक प्रिपरेशन मतलब क्या, इसमें वाटर भी होगा एज ए सॉल्वेंट, अल्कोहल भी होगा. सो हाइड्रोअल्कोलिक प्रिपरेशन व्हिच आर स्वीटन एंड फ्लेवर्ड एज इट इज. दो बार क्वेश्चन आ चुका है. इलिक्सिर. ओके, सिंपल. दे विल मोस्टली दे विल हैव पोटेंट ड्रग. पोटेंट मतलब स्मॉल क्वांटिटी का ड्रग होता है. सो द डोज ऑफ ड्रग इज वेरी स्मॉल like sedative drug or antihistaminic drug or anthelmintic drug. So alcohol content of elixir is nothing but the around 10 to 40%. Okay, 10 to 40%. Now linctus, what do you mean by linctus? Linctus is nothing but the again oral viscous liquid dosage form. They are used in the cuff. Their action as they act as like a demulcent. They will have a demulcent property and mostly they contain a sedative drug or expectorant drug. They should be sipped. They should be sipped slowly without diluting with the water. Without diluting with the water. डाउनलोडिंग होगा यहाँ पे, डायल्यूट नहीं. सो दे शुड बी सिप्ड विदाउट डायल्यूटिंग विद द वाटर. मतलब वो स्लोली लेना है आपको, उसके साथ में वाटर नहीं लेना है फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट. दे शुड बी सिप्ड विद द विदाउट वाटर. ओके, दे शुड बी सिप्ड स्लोली विदाउट वाटर टू गेट अ मैक्सिमम इफेक्ट, टू गेट अ मैक्सिमम इफेक्ट, राइट. Now next is suspension. So what is suspension? It is a biphasic dosage form. Biphasic मतलब दो फेज होंगे उसमें. Okay, so in this a solid substance which is dispersed either or suspended in a continuous phase. Biphasic dosage form containing drug which are dissolved or suspended in a suitable vehicle. So what is the range of particle in the suspension? So 0.5 to 5 micron, that is the particle size range in the suspension. Now next is a mixture. Mixture क्या होता है? They are extemporaneously prepared small number of extemporaneously prepared liquid dosage form and for meant for small number of doses, small doses. Liquid preparation for oral administration usually for acute condition like cough, diarrhea, constipation, indigestion. तो इसके लिए mixture होता है. Then gels. Gels are nothing but the semi-solid dosage form. So aqueous colloidal suspension of hydrated form of insoluble drug. Okay. So they are nothing but the solid jelly-like material. There is a cross-link resisting. There is a substantially cross-link resisting without flow. They will not show any flow. So they are the semi-solid preparation again, gel. But they look like a, they will look like a jelly like consistency. Jelly like consistency. Sorry. Next is a collidons. Collidons मतलब क्या? Collodions. Okay. Collodions. So liquid preparation for external application, for the skin, and they are applied on the cut and abrasions of the skin. Basically they are the antiseptic and protective in nature. Collodions. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, आपको इतना स्लोली नहीं फास्ट लेना चाहिए. ऑइंटमेंट.
Ointment means again semi-solid preparation meant for application on the skin and mucous membrane. Now, which kind of drugs? इसमें सभी टाइप के ड्रग हो सकते हैं, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, अगेन एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ड्रग्स, corticosteroids, ये सब टाइप के ड्रग इसमें हो सकते हैं. Ointment. Then creams, again viscous semi-solid preparation which is in which dispersed medicament or drug is dispersed in suitable base, and they are also applied to skin and mucous membrane. Creams, so they are mostly OW emulsion. Now next one is a paste. What do you mean by paste? जो toothpaste होता है वैसे ही medicated paste होते हैं. So semi solid preparation again applied externally to the skin. They are the thick and stiff. ये बहुत ही thick होते हैं, stiff होते हैं, जल्दी spread नहीं होते. They are containing antiseptic, protective or smoothing dressing. They are also applied on skin or wounds. Next होता है आपका jelly. Next one is nothing but the jellies. So jelly, what are they? Transparent, translucent, non-greasy. Jelly जब आप लगाते हो कोई भी, जैसे आपका petroleum jelly. So it is used for the lubrication purpose. Petroleum jelly is also used as a conductance in the diagnostic. So jelly, they are the transparent, translucent, non-greasy, semi-solid preparation. They are applied externally on the skin. Prepared by using natural gums. Natural gums, this is tragacan, sodium arginate, or cellulose derivative. Now, suppositories, they are again semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form meant for insertion into body cavities. है ना, जैसे आपका ear हो गया, nose हो गया, rectum हो गया, vagina हो गया. They are meant for the insertion into body cavities. They will melt at a body temperature. They will melt and they will release the drug at a body temperature. Suppository, उसके ऊपर भी देखने वाले अपने पूरा. Enema means what? It is a liquid, okay, liquid preparation. Enema is nothing but the aqueous or oily solution or suspension. It is introduced into the rectum. It is introduced into the rectum for two purpose. Either for diagnostic purpose or for ट्रीटमेंट. डायग्नोस्टिक के लिए इनेमा करते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड इनेमा है ना, डायग्नोस्टिक. ट्रीटमेंट ये जैसे फॉर एग्जांपल if you are suffering from constipation or if you are not promoting your boil, so in that case to promote your boil there is enema known as a laxative enema. So laxative enema, okay, and in that also there are two types. So first one is a retention enema and second one is a evacuant enema. So evacuant enema means what? वो enema देने के बाद में 10 to 15 मिनट के बाद में आपको आपके पेरिस्टाल्सिस चालू हो जाएगा और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा. So that whatever fecal matter is there, it will be evacuated. That's why evacuant enema. Now retention enema means what? So that enema is given, it is inserted into rectum and given, and that is allowed to retain over there in the rectum. Those are the retention enema. Both are used for as a laxative. Okay. There are certain formulations, for example, in the children's. So diazepam enema is there, phenobarbital enema is there, but nowadays it is not used. It is older dosage. Few drugs which forms of eutectic mixtures. So eutectic drugs with their examples. Okay. When these drugs are mixed together, they will be get liquefied. Liquefy हो जाएंगे. Eutectic drugs and examples. So acetanilide, है ना, then acetophenidine, aminopyrin, aspirin, benzocaine, camphor, menthol, thymol, phenol, naphthol, है ना. ड्रग के नाम याद रखो. Chloral hydrate, benzocaine, then lidocaine, रिसोर्सिनॉल, पेनासिटिन मतलब है पैरासिटामोल का ही प्रोड्रग है. सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, प्रीलोकेन. देयर इज वन फॉर्मुलेशन लिडोकेन एंड प्रीलोकेन, दोनों का एक फॉर्मुलेशन आता है लिडोकेन, व्हिच इज ऑलरेडी इट इज अ यूटेरिक मिक्सचर. इसका एक ऑइंटमेंट आता है फॉर बर्न्स एंड ऑल दैट, इल्मा क्रीम, इल्मा बोलते हैं उसको. So lidocaine, prilocaine, it is a combination of two drugs and it is eutectic mixture. It is a eutectic cream, eutectic formulation. Okay? ये सब ड्रग क्या है? यूटेरिक मिक्सचर है. When these drugs are in a present in the formulation, if you mix these drugs, what will happen? They will get liquefy. Eutectic mixture. याद रखना है acetanilide, acetophenidine,
Penetidine, then aminopyrin, aspirin, benzocaine, camphor, thymol, menthol, phenol, naphthol, chloral hydrate, and lidocaine, resorcinol, phenacetin, salicylic acid, erythrin, pilocaine. In common hygroscopic and deliquescent powder, कौन कौन हाइड्रोस्कोपिक है डेलिक्वेशन, बिकॉज कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फॉलोइंग इज अ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, फॉलोइंग इज अ डेलिक्वेशन पाउडर ऐसा. सो हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्वेशन देखो, ammonium bromide chemical, then ammonium chloride, ammonium iodide, ammonium chloride, ammonium bromide, chloride, iodide. Chloride and bromide sort of calcium, epidine sulfate, then histidine hydrochloride sulfate, hyoscyamin hydrobromide sulfate, hydrobromide and sulfate, ये दो salt है, hyoscyamin hydrobromide and sulfate, iron and ammonium citrate, iron ammonium citrate, phosphatic hydrobromide, phosphatic sulfate, phenobarbital sodium, pilocarpine, pepsin, potassium acetate, citrate, sodium bromide, sodium iodide, sodium iodide, etc. etc. Yeah. Zinc chloride, sodium nitrate. So these are the common hygroscopic or deliquescent powder. Ammonium bromide, chloride, iodide. Ammonium bromide or ammonium chloride or ammonium iodide. In a chloride bromide sort of calcium, epidine sulfate, histidine hydrochloride sulfate, histidine hydrochloride or histidine sulfate, hyoscyamin hydrobromide or hyoscyamin sulfate, iron, okay, then ammonium citrate, iron citrate and ammonium citrate, phosphatic hydrobromide, phosphatic hydrobromide or phosphatic sulfate, phenobarbital sodium, pilocarpine, okay, pepsin, potassium acetate, potassium citrate, sodium bromide, sodium iodide, zinc chloride, sodium nitrate. So these are the powder, or these are the substances known as hygroscopic or deliquescent. Some efflorescent powder, है ना. Hygroscopic मतलब क्या? What do you mean by hygroscopicity? So am I audible to you? There are three terms: hygroscopicity, hygroscopic, then deliquescent. What do you mean by hygroscopicity? So this is nothing but the property of substance to absorb the moisture from air. Hygroscopic substance क्या करेगा? Air से क्या करेगा? Moisture absorb करेगा, right? So hygroscopicity means it is a property to absorb the moisture from air when exposed to humid condition, and there is a increase in the weight, increase in the weight, तो इससे weight increase होगा ना, absorb होगा moisture, तो ये compound का weight increase होगा. Well, but the extent of weight increase based upon that also slightly hygroscopic, very hygroscopic, non-hygroscopic को भी है. But few compounds they absorb the water from moisture up to such a extent that they will get liquefied, they will get liquefied or they will be converted to liquid. कुछ compounds है सोडियम क्लोराइड, if you it is exposed to humid condition, जैसे बरसात के दिनों में देखो, अगर नमक आपने खुला छोड़ दिया ना तो उसमें पानी हो जाता है. Why? Because it absorbs the moisture from the environment and it become liquefied. Sodium chloride is example of deliquescence. Okay, so deliquescence means absorption of water up to such a extent that liquid it will become a liquid. Then another term is there known as a efflorescent powder. So what is it? So it is opposite to the above. इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोस्कोपी में डेलिकेसेंसी में ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर रहा था, कहाँ से? एयर से. लेकिन इफ्लोरेसेंस में क्या है, ये मॉइस्चर रिलीज करेगा, it will release the moisture, it will release the water of crystallization when when it is exposed to the humid condition. तो इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर था ये. What is efflorescent? So these are the material which will release the water of crystallization or water present in the molecule when they are exposed to a humid conditions. So example is nothing but the alum. Alum मतलब तुरटी, atropine sulfate, calcium lactate, citric acid, then cocaine, codeine phosphate, codeine sulfate, ferrous sulfate, quinine sulfate, quinine bisulfate, quinine hydrobromide, quinine hydrochloride, sodium acetate, carbonate phosphate, and sodium acetate, sodium carbonate, sodium phosphate, scopolamine hydrobromide, morphine acetate, and strychnine sulfate. These are the compound which are known as a efflorescent. है ना, आलम हो गया आपका, आलम, आलम मतलब purity. Sodium sulfate, caffeine, okay, so calcium lactate, then citric acid, okay, then codeine phosphate, codeine sulfate, cocaine, ferrous sulfate, quinine,
bisulfate, chlorine hydrochloride, hydrobromide, chlorine hydrochloride, sodium acetate, carbonate, sodium carbonate, sodium phosphate, scopolamine, hydrobromide, morphine acetate, strychnine sulfate. So these are the known as the efflorescent nutrient. So what will they do? They will release a water of crystallization when they are exposed to humid condition. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या है? ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या है? ये मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा. कहाँ से? एयर से. It will absorb moisture from the air and there is an increase in the weight. Okay. Now deliquescence means what? So it will also absorb the moisture from the air. It will also absorb the moisture from the air, but it will get liquefied. ये liquid बन जाएगा. जैसे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में क्या है? वो moisture absorb करता है. There is an increase in the weight. डेलिक्वेशन पाउडर इतना moisture absorb करेगा वो liquid बन जाएगा. और तीसरा एक होता है इफ्लोरेसेंट. इफ्लोरेसेंट इफ्लोरेसेंट मतलब क्या? They will release the water molecule. They will release the water molecule, you know, when exposed to humid condition. There are few chemicals which can react violently when they are mixed. आप जब कोई सॉल्यूशन बनाते हो या फिर लैब में भी कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप मिक्स करते हो आपको मालूम नहीं होता, दे रिएक्ट वायलेंटली, है ना. जैसे मतलब हमारे टाइम पे क्या था, डिप्लोमा में हमारे एक टीचर थे, तो ऐसे ही बच्चे खेल रहे लैब में, इधर ये फेंक रहे उधर वो फेंक रहे, ग्लव्स नहीं पहना कुछ नहीं पहना, ऐसे ही खेल रहे केमिकल के साथ. तो हमारे टीचर ने क्या बोला कि जो बोले तुम दो इधर आओ, है ना. दो लड़कों को बोले, बोले खड़ा रहे यहाँ पे. और क्या किया वो हमारे टीचर ने, नाइट्रिक एसिड की बोतल मंगाई, है ना. वहाँ पे पिपेट आउट किया उसको और एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिया. कहाँ पे? अपने कलाई के ऊपर, दोनों लड़कों की. और बोले जाओ, बोले 2 दिन के बाद. जब 2 दिन के बाद आया ना, तब पूरा उसका वुंड हो चुका था. वो इतना वुंड हो चुका था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे सेप्सिस भी हो रहा था. मतलब उन्होंने हमको ये सब सिखाया कि लैब में हो आप एसिड के साथ खेल रहे हो, ये तो बहुत ही इतना डेंजर एसिड नहीं नाइट्रिक एसिड, बाकी तो कितने खतरनाक है. HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया. तो मतलब है ना. सो इफ यू डोंट नो which chemicals they will react violently, so if you know, then you can save yourself. So oxidizing agent like bromine, chlorine, iodine, nitrate, chromate, then permanganates, then silver nitrate or silver oxide salt and silver salt peroxides, then potassium dichromate, okay, potassium chlorate, potassium nitrate, trinitrophenol. These are the chemicals. They are the oxidizing agent. तो ये oxidizing agent है. When they are mixed with anything else, so they will react violently. तो वैसे reducing agent कौन है? volatile oils, tannic acid, tannins, sugar, sulfur, alcohol, glycerin, charcoal, bromides, lactose. So lactose का तो ये भी होता है, lactose से आपका पड़ता भी है lactose. So these things when they are mixed together, they can react violently. So you should be cautiously while preparing the solution of this. Chlorine, bromine, iodine, nitrate, chromate, permanganate, silver nitrate, silver oxide and its salt peroxides, potassium dichromate, potassium chlorate, potassium nitrate, then trichlorophenol, volatile oils, tannic acid, tannin, sulfur, alcohol, glycerin, charcoal, bromides, lactose, etc. Now we have already seen the prescription, but again I will explain you part of prescription. So this is a typical prescription. So you can see over here, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम. सो नेम ऑफ हॉस्पिटल, नेम ऑफ पेशेंट्स, ओके, नंबर. ओके, फर्स्ट इज नथिंग नोन एज पेशेंट इंफॉर्मेशन, नेम रहेगा, एज रहेगा, सेक्स रहेगा, डेट रहेगी. देन सुपरस्क्रिप्शन, दिस इज नोन एज सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन ये रहेगा सुपरस्क्रिप्शन, बिकॉज RX इज प्रेजेंट इन द सुपरस्क्रिप्शन. देन रहेगा आपका ये वाला पार्ट. What is this? Inscription. Inscription. Actual name of drug. Inscription. Okay. Then instruction to the pharmacist. Then signature. And then renewal instructions. And lastly, signature of your. So these are the part. To push the RX symbol in a subscription. Superscription. It is known as a superscription. Then this is nothing but the subscription. And this is nothing but the inscription. Okay, signature.
सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड इंस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में मतलब ये यहाँ पे सिंबल है ना, सब्सक्रिप्शन में मतलब पूरा इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, इंस्क्रिप्शन मतलब ये instruction to the pharmacist. We already seen the part of prescription. Just I wanted to show this. Next is again, let's revise some Latin terms again. जो मैंने लिए थे वो पूरे नहीं थे, है ना, अपने कुछ कुछ देखे हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, बट अगेन यू कैन सी लैटिन टर्म्स ऑफ डोसेज फॉर्म। लैटिन टर्म्स ऑफ डोसेज फॉर्म, फर्स्ट टर्म है आपका ऑरिस्टेली। ऑरिस्टेली इट इज अ टर्म फॉर एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप मतलब क्या, ऑरिस्टेली। कैप्सूला मतलब सिंपली आता है आपका कैप्सूल्स, कैप्सूला अमाइलिसिया। कैप्सूला अमाइलिसिया मतलब कैचेट। कैटाप्लाज्मा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कैटाप्लाज्मा इज नथिंग बट द ए पोल्टिस। कैटाप्लाज्मा इज नथिंग बट द पोल्टिस। चरता, चरता और सिंपली पाउडर। कोलुटोरियम, कोलुटोरियम मतलब माउथ वॉश, ये हो चुका है। कोलिरियम, ओके, कोलिरियम मतलब आई लोशन। क्रीमर, क्रीमर मतलब सिंपली क्रीम, क्रीमर मतलब सिंपली क्रीम। एम्प्लास्ट्रम, एम्प्लास्ट्रम मतलब सिंपली प्लास्टर, है ना, प्लास्टर। इमल्सियो मतलब इमल्शन, है ना। गार्गिसिमम, गार्गिसरिज्मा मतलब गार्गल, ओके। गार्गिजिज्म, गार्गिज्मा मतलब क्या, गार्गल। एंड जिलेटिना मतलब जेली। जिलेटिना is the Latin term for jelly. Then gutti, okay, gutte, gutte means drops, gutte means drops. समझ रहे हैं आपको? Yes, are you getting or not? So obviously means ear drop, ear drop. Gutte means drops. Astus means draught. Draught means what? ये एक ही बार में लेना पड़ता है, अपन को बोला था। Draught means it is taken once time. Astus, astus means draught. Inhale, inhale, okay. Inhalatio, inhalatio, inhalatio means inhalation. Injectio, injectio मतलब injection. Insufflatio मतलब insufflation. Linctus मतलब linctus simply. Lenimentum means liniment. So these are the some Latin dosage form, Latin terms for dosage form. तो ये एक दो से इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कोलोनेरियम के ऊपर क्वेश्चन है ना, जैसे ये अस्टस और ऑरिस्टेली, कैटाप्लाज्मा, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इन द फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, बट एज यू हैव डिस्पेंसिंग फार्मेसी दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। देन डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग, और लिकर, लिकर मीन्स सॉल्यूशन। लोशियो मीन्स इलोशन, लोशियो मीन्स इलोशन। मिस्तुरा, मिस्तुरा, मिस्तुरा मीन्स मिक्सचर। नारिस्टली मीन्स नजल ड्रॉप, ऑरिस्टली मीन्स ear drop, narration limits nasal drop. Nebula, nebula मतलब क्या, स्प्रे, nebula मतलब स्प्रे। oculum, okay, oculum means eye ointment, oculum eye ointment। पास्ता, पास्ता मतलब खाने का पास्ता नहीं है, पास्ता मतलब, पास्ता मतलब ये पेस्ट, मैं तो बोलेंगे पास्ता मतलब कौन सा, खाने का पास्ता। वो खत्म हो गया, ये आधा पास्ता ही बाकी, आखिरी पास्ता। पास्ता मीन्स पेस्ट। पेसस मीन्स पेसरी। पिलुला, 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 पिलुला मीन्स पिल्स। आपके पिलुला नहीं, तुमच्या पिलुला नाही, पिलुला मीन्स पिल्स। पुलविस, पुलिस मीन्स पावडर, तुम्ही म्हणाल पिलुला, पिलुला म्हणजे काय, तुमच्या पिलुला नाही, तुमचं पिलू 70 केजीचं आहे, 70 किलोचं पिलू तुमचं, पिलुला नाही। इट इज पिलुला, पिलुला मीन्स पिल। पुलविस मीन्स पावडर। Then suppositorium means your suppository. Tabella, tabella means tablet. Tabella means tablet. This is the important again. Eugentum, that is a ointment. Okay. Then vapor, vapor means inhalation. So these are again a dosage form known as the Latin terms. Again you will see next. कुछ हो चुका है इसमें का। Methods for administration, इसको यूज कैसे करना है, लेना कैसे है। So what is Latin terms related to method of administration? So first one is known as addendus. Addendus is nothing but the to be added. Addendus. Applicandus means to be applied. Applicandus. Capiandus. Capiandus means to be taken. Dendus. Yeah, dendus means to be given. Deglutendus. Deglutendus means to be swallowed. Imprecandus means to be rubbed. We have seen. Inhalator means to be inhaled. Instilant, instillendus is to be dropped in.
Misendus means to be mixed. Signa means level. Signa means level. Zugendus means to be sucked. Okay? Semendus means to be taken. बाद में टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना. सेमेल इन डी, सेमेल इन डी मीन्स वंस अ डे है ना. बिस इन डी मीन्स ट्वाइस अ डे. टेर इन डी मीन्स थ्राइस अ डे. क्वार्टर इन डी मतलब 4 times a day. आपने देखा होगा, if you have seen the prescription, few doctors also, few doctors today also they used to write this, you know, BID. BID मतलब ये बीस इंडी मतलब ट्वाइस अ डे है ना. कुछ कुछ मेडिकल वालों को ये समझ में नहीं आता भी BID मतलब TID मतलब क्या, क्योंकि है ना BID मतलब 20 इंडी ट्वाइस अ डे. TID मतलब थ्राइस 3 times a day है ना. टैबलेट लिखा है ना. कैल्पोल 300, कैल्पोल 500 ना. बीडी है ना. बीडी तो आजकल लिखते हैं, वो पहले BID लिखते थे, 20 इंडी. TID थ्राइस इंडी लाइक दिस. अगेन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके रिलेटेड टर्म्स कौन से लैटिन. सो फर्स्ट इज प्राइमो मैने. Primo mane means early morning, early in the morning. Primo mane. Omni mane. Omni mane means every morning. Jentaculum, ये भी टर्म इम्पोर्टेंट है. जेंटाकुलम मीन्स ब्रेकफास्ट है ना. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप जी नहीं सकते. जेंटाकुलम इन प्रेंडियम. प्रेंडियम मीन्स नथिंग बट द डिनर. तो प्रेंडियम से ही एक टर्म आता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल. प्रेंडियम लैटिन टर्म में उससे पेरेंडियल टर्म आता है. पेरेंडियल मतलब आफ्टर मील. नॉक्टे. नॉक्टे मतलब क्या है, एट नाइट. नहीं तो म्हणायचे नक्टे. नक्टे नहीं, नॉक्टे. ओमनी नॉक्टे मीन्स एवरी नाइट. ओमनी ओरा मीन्स एवरी आवर है ना. ओमनी नॉक्टे मीन्स एवरी नाइट है ना. ओमनी ओरा मीन्स एवरी आवर. एंटी सिबोस मीन्स बिफोर द मील. एंटी मतलब बिफोर. पोस्ट सिबोस मीन्स है ना. पोस्ट सिबोस मीन्स आफ्टर मील्स. आई थिंक इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये. The acronym, okay, the abbreviation AC is used for following term. एक क्वेश्चन आया था GPAT में. Abbreviation AC is used for which term? So it is nothing but the before meal. Okay. AC means anti-sibos. Anti-sibos means before meal. And post-sibos means after meal. Inter-sibos मतलब क्या है, between the meals जो आप करते हो. Between the meal कुछ भी करते हो. पार्ट्स ऑफ बॉडी रिलेटेड लैटिन टर्म्स. डेक्स्टर. डेक्स्टर मतलब क्या है, डेक्स्टर मतलब राइट. तो इससे एक टर्म आता है डेक्स्टो. डेक्स्टर से आता है टर्म डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो मीन्स राइट रोटेशन. तो डेक्स्टर मतलब क्या, राइट. लिवो. ओके. लिवर्स. लिवर्स मतलब क्या, लिवर्स. LEALAEVS. लिवर्स मतलब लेफ्ट. तो इससे एक टर्म आता है लिवो है ना. पार्ट अफेक्ट. पार्ट affectee. Part affecting must to be applied for the affected part. To the affected part affectee मतलब to be applied for the affected part. Branchio. Branchio मतलब the arm. Capiti मतलब the head. Cruri मतलब the leg. Sternio मतलब the chest. Sternum इसे टर्म आता है sternum. Sternio एक टर्म था लैटिन टर्म, उससे आपको स्टर्नम आता है. स्टर्नम आपके एचएफ में जो है ना स्टर्नम है. स्टर्नम इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स. स्टर्नम. देन आउरी. आउरी मींस एयर. उससे गुटुरी जुगुलो. गुटुरी जुगुलो मींस थ्रोट. थ्रोट. नेजो मींस नोज. ऑक्यूलस मींस आईज. ऑक्यूलस. ऑक्यूलर टर्म कहाँ से आया फिर, ऑक्यूलस ये लैटिन टर्म है, ऑक्यूलस उससे आता है. Now you can see over here again other terms. So what are the other terms? Midday. Midday means what? Midday means saint. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Midday means saint. इस आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लास्ट में लिखा midday. Midday मतलब saint. अभी आजकल नहीं यूज करते ये टर्म्स. Pyros agitata. Philala Prios agitata means shake well before use. Shake the bottle before use. मिट्टे टेल्स. मिट्टे टेल्स मतलब सेंड. टेल्स मतलब सेंड सच. डोलोरे अर्जेंटे. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए. डोलोरे अर्जेंटे. डोलोरे अर्जेंटे मतलब व्हेन पेन इज अ ट्रबलसम. व्हेन पेन इज अ सीवियर. तो इससे एक टैबलेट का नाम भी है डोलो. डोलोरे अर्जेंटे व्हेन पेन इज अ सीवियर. मोडो डिक्टो.
Modo dicto. Modo dicto means as directed. Modo dicto means as directed. Prore nata. Prore nata means occasionally. Yeah. Statin. Statring. Yeah. एक टर्म यूज होते हैं स्टैटिंग. इसका एब्रिविएशन होता है स्टैट. When I was in a I was working in the पुणे. जब पुणे में मैं B.Pharm कर रहा था तो मैं इवनिंग में मेडिकल शॉप के ऊपर जॉब करता था. तो वहाँ पे ये डॉक्टर लिखते हैं स्टैट. और मुझे मालूम नहीं था ये स्टैट मतलब क्या है. स्टैटिंग. तो ये स्टैट क्या है मुझे समझ में ना आता. तो वो सब मतलब मैं पूरा डॉक्टर के पास गया, उसको पूछा हुआ ये स्टैट मतलब क्या है. मुझे तो एक्सपीरियंस था लेकिन ये स्टैट कभी नहीं देखा. ये स्टैट मतलब है टेक इमीडिएटली एट वंस. मतलब क्या, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, उसमें का एक टैबलेट के आगे लिख दिया स्टैट. इसका मतलब ये टैबलेट आपको अभी इमीडिएटली लेना है. तो स्टैटिंग मतलब क्या, इमीडिएटली एट वंस. टैबलेट आपको इमीडिएटली लेना है. जैसे आपको वॉमिटिंग हो रहा है, आपको कुछ पॉइजनिंग होके आपको आया लेकिन माइल्ड है, अपना डॉक्टर एडमिट नहीं कर लेगा. लेकिन मेडिसिन के बाद में एक एक जैसे क्लोरोप्रोमाइन एक टैबलेट लिख दिया है स्टैट, वो इमीडिएट लेना है. जैसे स्टैट मतलब इमीडिएटली एट वंस. नाउ टसी अर्जेंटी. टसी अर्जेंटी और तुसी अर्जेंटी. तुसी अर्जेंटी मतलब क्या होता है. टसी अर्जेंटी और तुसी अर्जेंटी मीन्स व्हेन cup is a troublesome. Cup is a troublesome. So these are the Latin terms. They are very very important and आपको मालूम होना चाहिए because if they are not asked these things in the GPAT, but definitely they will ask you in the Niper and other exams also. So am I audible to you clearly? Variation in the time of onset of for different dosage form. So while designing a dosage form, while formulating a dosage form, so you have to take parameters in the consideration. तो उसका एक इम्पोर्टेंट लिखा है मैंने यहाँ पे टेबल्स. सो वेरिएशन इन द टाइम ऑफ onset फॉर द डिफरेंट डोसेज. मतलब कौन सा डोसेज फॉर्म है ना. तो क्या है वेरिएशन इन द टाइम ऑफ onset ऑफ एक्शन फॉर द डिफरेंट, मतलब कौन सा डोसेज फॉर्म जल्दी एक्शन दिखाएगा. So intravenous injection, you will get a immediate action. Intravenous injection, it will show the onset of action is nothing but the seconds, few seconds. So after intravenous injection, the you will get a effect in a seconds. After intramuscular injection and subcutaneous injection, or if you take a buccal tablet, buccal means tablet which is meant to place, which is to be placed in the pouch which is made from the cheeks and teeth. So a buccal tablet. Aerosols gases. So it will act in a minutes. So onset time is a onset time of onset action is a in a minutes. Some depot injection, oily injection or depot injection, solutions, suspension, powders, tablet, capsule, granules, or modified release tablet. So they will their onset of action is nothing but the few minutes to hour. कुछ minutes लेके hours में तब उसका onset time हो सकता. Then several hours. So entry coated formulations, their onset time of onset action is several hours. Say 3 hours, 4 hours. Depot injection, so particularly steroid and implants. So their onset of action is nothing but the days to weeks. Depot injection जो होता है, implant जो होता है, आपने implant अभी डाल दिया है तो immediately आपको उसका action नहीं मिलेगा. So it will release drug after a week or after few days. Then topical preparation they will vary. उनका onset of action और onset time क्या होता है, vary होता है. कुछ topical preparation they will act within a 1 hour, within a immediately also. So for example अगर आपने पेन किलर जेल लगाया फुलिनी जेल, it will show immediately action within a few minutes. कुछ creams होते हैं जैसे antifungal cream, so they will less penetrate into the skin, so absorb के लिए वो कम हो जाएगा. So in that case onset of time is delayed. Dosage forms available for different route of administration. तो डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डोसेज फॉर्म कौन से है. तो ओरली आप क्या लेते हो, ओरल रूट इज यूज फॉर द सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, जेल, पाउडर, ग्रैन्युल्स, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स. तो ओरली ये सब लेते हो. रेक्टल रूट इज यूज फॉर द these formulations like suppository,
ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पाउडर एंड सोल्यूशन। तो आप बोले सर ऑइंटमेंट्स क्रीम वहाँ पे रेक्टली कैसे? सो लोकल फॉर लोकल एक्शन इन द रेक्टम, क्रीम्स ऑइंटमेंट्स। टॉपिकल एक्शन, सो टॉपिकल रूट के लिए so ointments they are topically creams, paste, lotions, gel solution, topical aerosol, foams and transdermal patches. Parenterally injectable कौन है? सभी इंजेक्शन आएंगे इसमें। इंजेक्शन it may be either solution, suspension or emulsion. Implants, irrigation, dialysis solution they are given by parenteral route. रेस्पिरेटरी रूट से कौन देते हैं? एरोजोल्स, एरोजोल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, पाउडर पम्प। आजकल पाउडर पम्प पे आता है। सो nowadays rotocap is available for asthma. So there is no solution, there is one just capsule, and in that there is a powder of drug, and there is one known as a rota inhaler. So what you have to so if there is asthmatic attack, so you have to inhale that rotocaps, roto inhalation, sprays, gases, nasal solution of inhalation. For eyes, solutions, ointment and creams. You know, eye drops, eye ointment, eye creams. Yeah. Actually, this part we are going to take in a physical pharmacy also. But यहाँ पे भी आपको मालूम चाहिए कि angle of repose and their flow properties. Angle of repose क्या होता है? Tan theta is equal to h upon r. है ना? Tan theta is equal to h upon r. Tan theta is equal to h upon r. आपने किया होगा ये प्रैक्टिकल। तो if angle of repose of powder is less than if it is less than and less than 30 or sorry less than 25 is known as an excellent flow as per the European pharmacopoeia. It is between 31 to 35 good flow, 36 to 40 fair or fair flow, or it can be increased by lubricants. Then if it is more than 40 or 41 to 45, so possible or possible. Then 46 to 45 poor flow, and 56 to 65 very poor flow, और 66 very poor flow. तो इतना सारा याद नहीं रखना है, कुछ बुक में आपको दिया है। if angle of purpose of powder is less than 25 excellent flow, 25 okay 25 to 30 good flow, 30 to 40 possible, more than 40 very poor flow, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में वो दिया है, तो अपन देखने वाले हैं when we'll see the physical pharmacy and industrial pharmacy. Again, CARS index is also there. CARS index is also known as a percent compressibility index. Percent compressibility index. CARS index is nothing but percent compressibility index. Hausner's ratio is nothing but the tap density divided by pore density. जैसा है वो अपन देखेंगे बाद में when we'll start in your physical pharmacy and industrial pharmacy. So this is nothing but the some viruses and their diseases. Okay, जैसे adenovirus है first. Adenovirus, okay, इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मेटेरियल होता है, एंड ओके इट इज नथिंग बट द ह्यूमन एडेनोवायरस। ये डिसीज होता है एडेनोवायरस। अरेना वायरिडी ना, वो लासा फीवर वायरस ये ह्यूमंस में है इसका एग्जांपल। ये फैमिली है उसका और इसका वहाँ पे एग्जांपल है ना। जैसे रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरिडी, ये यहाँ पे रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरिडी इज अ फैमिली। इसका एग्जांपल है आपका HIV। रेप्डोवायरिडी, रेप्डोवायरिडी का वायरस का एग्जांपल है रेबीज वायरस, रेप्डोवायरिडी, रेप्डोवायरिडी। तो ये फ्यू वायरस है। ये टेबल्स अभी बाद में आपको बुक में तो नहीं है, बाद में मिल जाएंगे। बाद में मतलब ये ऐड करेंगे आप में। आई थिंक दिस इज अ टुडे सेशन।